एक और वो रेगुलरिटी में हमें होती हुई दिखेगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस सेशंस और किस तरह प्रैक्टिस हुई, क्या हुआ, मैदान आधा आधा डिवाइड करके इधर थी टीम ऑस्ट्रेलिया, इधर थी टीम पाकिस्तान, किस तरह वो लोग पिचेस देख रहे थे, पिचेस पे आधे आधे लेटे हुए दिख रहे थे आपको चेक करने के लिए पिचेस, एक तरफ रिजवान तो दूसरी तरफ स्मिथ। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको ज़रा इस पैकेज में दिखाते हैं और फिर वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी, दोनों टीमों की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में मुसलसल दूसरा प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान टीम भी तैयारियों में मसरूफ। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पिनर नाथन लाइन ने मैच पिच को यूएई जैसी पिच करार दिया। Interesting, to be honest. Our training facilities were actually training about 3 pitches over on the centre wicket, and it actually wasn't spinning that much. I know we've got a little bit more grass on the wicket that we're training on compared to what looks like the match wicket. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने कहा वो बाबर आजम से मुकाबले के लिए तैयार हैं। I've always said from day dot in my career that I want to compete against the best players in the world, and Babar is definitely one of those guys. So, yes, I can't wait to challenge myself. But there's some unbelievable batters in this Pakistan lineup that I'm going to have some decent challenges with. But yeah, Babar's definitely high up there in the stakes of one of the best cricketers in the world, that's for sure. टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। ट्रॉफी को साबिक लेजेंडरी स्पिनर रिची बेनो और अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब किया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने बतौर रिजर्व प्लेयर स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पहला टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। So Richie Beno and Abdul Qadir Trophy, so Beno Qadir Trophy, अदिल बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इसका नाम बड़ा अच्छा एक सेट मिल गया। या और उम्मीद ये करते हैं कि इस नाम की बदौलत जो है ना, बोथ द टीम्स विल कंटिन्यू प्लेइंग टुगेदर और फ्रीक्वेंटली खेलते रहें। सिर्फ इधर इज दिस वन ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर नेम। वैसे मैं जब ये नाम मैंने सुना, अच्छा, सो वी नो अबाउट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होती है। वी नो अबाउट द वॉर्न मुरलीधरन trophy which is played between Australia and Sri Lanka. So very interesting thing, इससे साबित ये होता है कि जनरली जो सीरीज के नाम रखे जाते हैं सवेरा, ये होता है उन प्लेयर्स का जो कि आपस में 7 क्रिकेट खेल चुके होते हैं। अब रिची बेनू ने अपनी आई थिंक ही एंडेड हिज करियर बैक इन 1964 और अब्दुल कादिर ने तो उस वक्त अपनी क्रिकेट शायद पता नहीं खेलनी भी शुरू की थी या नहीं की थी। वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट एनीथिंग और एनीथिंग, बट प्रीटी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन ऑफ नेम, 2 legends of the game in their respective countries, Richie Benu and of course Abdul Qadir, and this name inshallah will be resonating a lot in the future and we wouldn't mind being the first winner of this trophy, Sawera. Exactly, not at all. Who would mind that? But जब मैं बात करती हूँ जर्नलिस्ट की, जब मैं बात करती हूँ मीडिया की, सो जहाँ हमारे लोकल जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वहाँ काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया से भी लोग आए हैं, फॉरेन मीडिया के भी लोग आए हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आ रहे हैं, पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। और जब हम बात करते हैं कि उनसे उनके तासुरात जाने जाएं, बिकॉज उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन इस टूर को कवर करने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान को। सो एक फॉरेन जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ an English sports writer and broadcaster, Isabelle Westbury. So Isabelle, welcome to the show, welcome to Game Set Match, and welcome to Pakistan. And I think you've heard this sentence, welcome to Pakistan, like zillion times. Oh, well, I don't get tired of hearing that sentence because it's a real privilege to be here. I'm very happy to be in Islamabad in Pakistan and to look forward to this test series. And Isabelle, I hope you would have realized that this is not a tennis program. We talk about cricket in this show, right? I hope Sawera has briefed you about that. We're all-rounders, aren't we? We can cover lots of different sports, I'm sure. All right, that's great. So, welcome to Pakistan. Let me do my part here as well for 197th time that you have heard this greeting. And the good thing is that you are starting from Islamabad. You know, there is a joke, and you'll be traveling. You are visiting Rawalpindi as well. But there's a joke in Pakistan that Islamabad is located 5 kilometers outside Pakistan. The city has got a very different feel. So perhaps I don't want to offend any of my Rawalpindi friends, but you will get the real sense of taste of Pakistan when you will traveling to Lahore and Karachi. Nevertheless, we are all set for the Benu Qadir Trophy.
How about the selection of the name? We were talking about that, Isabelle. You like the name? I really do. I really like it for the historical context. I think Richie Benaud, obviously, he only played 4 tests against Pakistan, but there were the 1959 tour, Australia tour to Pakistan was obviously quite a big one. It was when Australia won 2-0. It's very rare that they do that when they come to Pakistan. And of course, it was also I think the 3rd test in Karachi was the one in which the US President, Dwight Eisenhower, watched a very slow, very turgid day of test cricket. And no US president has watched cricket since. So I don't know what that means about what they think about test cricket. But there's a lot of history. And I think, to have a series that's named after 2 greats of the game in different eras, perhaps, it just lends itself to the gravitas of this historical series. I think it's brilliant. It's really brilliant. And when we talk about this series, Isabelle, is this the first time that you've been to Pakistan? And what do you think about the Pindi Stadium? Because I know you've been there already. Yes, this is my first time in Pakistan, and I think I'm so happy to finally be here because I was intending to come for the England tour. The England men's and women's team were going to come here in October. Of course, that got called off at short notice, and it was really disappointing. I could see how disappointing it was for Pakistan Cricket Board. It was disappointing on a personal level because I was so looking forward to coming, and I think also from a global cricket perspective, I felt it was a really bad decision from England. I think they let down Pakistan cricket, frankly. So I was very intent on coming to Pakistan at the next possible opportunity. And having been in Australia, where I didn't see a single England team win across the whole of the summer out there, I'm very much looking forward to Pakistan perhaps beating Australia, because I haven't seen it that often, and I'm looking for a little bit of something out here. Isabelle, you can leave it on us. Don't worry about that. Australians are going to get some lessons, some very nice lessons in Urdu here. I mean, just on a lighter side, did it take, coming to Pakistan, the entire idea and the thought, unfortunately, the image that is created, the image that is created of Pakistan all across the world, did it take some convincing to the loved one around you? I mean, your well-wishers and all calling up, hey, you're going to Pakistan, be very careful and stuff. Yeah. So, did it happen or no? Yeah, I think, to be truthful, it did. You definitely have, colleagues. Even when I was coming out with England, I was going to be, I think, the only English journalist out here because it was a short tour for the men. And there are concerns around that. But I think there's a big disconnect between the perception when you're at home, you're in England, and you think, oh, Pakistan, and everyone talks about all the incidents in the past. But, a lot of work has been done on a global scale, on cricket scale as well. And only to see the security arrangements that are in place, I think it was very important for, I guess, Western journalists or from Australia, from England or wherever, to be on the ground, because then you can see for yourself that once you arrive in a country like Pakistan, it's so much more than a security concern. If I think about the England series in the summer just gone, we had more security breaches and people running onto the pitch than I think I've ever seen in a Pakistan test. And so I think that the perception versus the reality is very different. I've been lucky, I guess. I grew up outside of England. My family lived in Damascus, in Syria for a number of years. So, and it's the same thing there. When we were there, it was amazing. We were so welcome. We lived a very free life. The culture is vibrant, the cuisine is brilliant, the people are lovely, and I was very confident that the same would be in Pakistan. Once you arrive here, then you get to experience it, and thank goodness we are here. When you talk about cuisines, the next question obviously I'll ask about food, because we Pakistanis are very crazy about our food. We love our food, and I hope you're loving it too. Oh, absolutely. I've only been here for, I guess, 48 hours, but we've been very, very lucky. I like my spicy food as well, and we went out to a lovely restaurant yesterday evening. Tonight, I think we'll be here for a barbecue. So yes, I am very happy with Pakistani food, and more of it, please. And Isabelle, before we talk serious stuff about cricket, I was just going through your profile, and it said that you have
You've spent your childhood in Mongolia, in Malaysia, in Eastern Island, in Syria, of course, you mentioned about that. And you have played cricket for the Netherlands. So you've been quite a nomad, right? A cocktail. Yeah, I was. But that's part of like one of the reasons I wanted to come to Pakistan, because the world is out there. My dad, he was a geologist, and so we lived all over the world. I've been to India a number of times to watch cricket, and I think that you never lose that sense when you have that bug, and when you've been to different places. In many ways, England is my foreign land, so I feel very at home here in Pakistan. Brilliant. Okay, so now talking about cricket, some serious talk regarding cricket now. You were there at Pindi Stadium yesterday when you get to see the pitch there. Looking at the pitch, like if you have a distant look for the pitch, it looked like a belter. But once you get a closer look, it looks like maybe there are just 2 more days, it'll get more drier, there'd be more cracks. What's your take on the pitch of Pindi Stadium? Yeah, interesting. We listened to Nathan Lyon, the Australian off-spinner, earlier today, and he's saying that didn't look as though there'd be much spin. I think it will lend itself to seam. I think we'll see certainly like that reverse swing coming out in the later days of the test. I think Australia will probably only play with 1 spinner. They've got a few part-timers as well. They've got obviously a very strong seam attack. I think it will. Yeah, I don't think it will break up all that much, to be honest. I think it will favour the seamers, and of course for Pakistan, I hope that nobody else gets either injured or COVID, because that's where you think the tussles are going to be. Both teams do have stellar seam lineup, so I think it will be a true track, and I'm looking forward to a good contest. Yeah, and if you go by the reputation, Isabelle, then Rawalpindi has actually got the reputation. It has got, compared to other tracks that you'll be seeing on your tour in Lahore and Karachi, it has got a slight bit of, it does help the pacers. We have seen it in the recent times that the wicket may look that it is helping the batsman, but there is always something there for the seamers. So, when you look at the seam attack for Pakistan, you'll be seeing Shahid, Afridi there. And Shahid is right now on cloud number 9 because his team, Lahore Qalandars, won the Pakistan Super League. So were you following Pakistan Super League, by the way? Yeah, absolutely. Unfortunately, I was actually flying, I think, when the final took place. So I didn't watch, I wasn't able to watch the final, but I've certainly been following it, because we've got a number of Australian players, a number of England players that have been there as well. And it's a great tournament. So 100% I've been following it. And for the English commentators and for the English analysts, I think PSL, I mean, they have to give some credit to the PSL, because they just bring out some unknown English player. For many of them, like Livingston, and I think this year we have this Harry Brook, and this year Will Snead. I mean, a very baby-faced cricketer, and we were thinking, wow, who is he? And he was there. I think he came very close to scoring 2 centuries in this PSL. So I think for English analysts and commentators, I think PSL is one tournament they should be following very, very closely, because they can see a number of their future stars there playing. James Wince, I think he started his foreign franchise career. Livingston is one of those. Joe Clark. They all started in PSL 5-6 years back. Alex Hales had a wonderful in the PSL as well. And actually, I think the PSL has a wider resonance off the pitch as well. Now that it's moved back to Pakistan, I think it played a really important role, for example, in Shane Watson being one of the sort of advocates to the players for Australia and making them comfortable that Pakistan is a perfectly brilliant place to come to and to play cricket. So I think, and hopefully that will play a role as well when England come over, the England men's test team come over later this year. There's some breakout stars on the pitch, and there's some good diplomacy off it. So I'm a big fan of the PSL, 100%. Brilliant. Isabella, talking about this Australia tour to Pakistan, as you mentioned, and I remember you were very vocal about when ECB said that they're not touring Pakistan, and you were very vocal. I've seen many footages of you talking about it and you being furious about it. Now, Australia versus Pakistan, how important do you think this tour is for, not just for Pakistan cricket, but the balance of cricket, the balance of world cricket altogether? Oh, yeah. I mean, for years, I think I've been worried in the men's game, especially, that you've got this
this so-called big three, England, India, Australia, who have kind of formed a little racket around themselves. And you know, I mean, Australia haven't toured another country other than England for years now. Their last overseas tour was in 2019, and that was to England for the Ashes. So I think that this, you know, there are some amazing test teams. I mean, if you're looking at just the performance on the field, England are a pretty poor test side at the moment. But Pakistan, South Africa, Sri Lanka as well, New Zealand, of course, the #1 test series. The idea that you've got this big three is just absolutely absurd. So yeah, of course, it's extremely important that Pakistan be playing test cricket back here, but also be showing how good they are as a test side. If you look at actually some of the best players in this Pakistan test side, even Babar Azam, I think he's only played 30-odd tests. Like the amount of test cricket that Pakistan is able to play at the moment compared to the likes of England, who arguably play too much test cricket, there's a real imbalance. So I think we need to get that back in the men's test cricket world. But also I think it's important when you think about the global game on the women's scale, is that there's an imbalance as well. You've got England and Australia with a lot of money and investment in the women's game. You could argue that India has the money but hasn't got the attitude or the intent to invest in the women's game. But I'm hearing already that Pakistan is thinking of, the PCB is thinking of a women's PSL as early as next year. So yeah, I think this could pave the way for a more equal playing field in both the men's and the women's game, and I'm looking forward to the future. Exactly, and the recent performance that Pakistan women cricket team is having right now, like in the warm-ups, they have beaten New Zealand, then they've yesterday they've beaten Bangladesh, so which means they're heading in the right direction. But before we go any further, Isabella, we'll go on a short break, and ब्रेक से हम वापस आएंगे, और जैसे ही वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी करेंगे ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान के हवाले से। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। Afridi loves it, and we love him too. ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। Afridi loves it, and we love him too. ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। Afridi loves it, and we love him too. ये है लाला का समा।
जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। Bang, oh, beautiful! No way! That's downtown! इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। Oh, boom, boom! Boom, boom! Afridi has struck again, number 2. पूरी कौम का लाला बनाया। And welcome back to Game Set Match in conversation with Isabelle Westbury, English sports writer and broadcaster. And Isabelle, moving on further, talking about this series, Australia tour to Pakistan, who would be your 3 trump cards from Australia and from Pakistan? Oh, now you've got me. I think from Australia, you can't go past the captain, Pat Cummins. He had a really good first series as captain against England. And I think that the pitches out here will really suit his height, his bounce. I think minus Labuschagne, as far as the batting is concerned, we've seen how much he's been preparing, both with his mat that he's invented back at home before he came out, and he's a real student of the game. And then I think Mitchell Starc as well. I think he had a sort of a comeback series against Australia, against England, where perhaps some people have written him off, but he's such a potent left-arm seamer. For Pakistan, let me think. I think, Babar Azam, I think I'm just looking forward to seeing him in his whites again. Obviously, we know that he was the ODI Cricketer of the Year last year, but he's such an important player in that middle order, that anchor for Pakistan. Shahid Afridi, I know he's a name on everyone's lips, and it's very easy to say that as well. And then I think I'm quite looking forward to seeing Abdullah Shafiq as well. All right. Obviously, he played really well against Bangladesh in the last matches. So I think he's somebody who's obviously quite new to the scene. We haven't seen a lot of him, but he's had a really good start at the top of the order, and I expect him to start as well in that first Test match. So I think those are my 3 to watch. All right, Isabelle, we created a playing 11 for Pakistan in our yesterday's game. One of the analysts was here with us, and we did not put Abdullah Shafiq in our squad, in our team, the playing 11. Yeah. So just to make sure that you watch him play, I think we're dropping Shan from our team, and we are bringing in Abdullah. All right, so that you can watch him play, and maybe score a century against Australia as well. But one player. Sorry, please carry on. Who does your team have opening? Because I had Shan Masood and Abdullah Shafiq opening, or am I off the boil there? We have Shan Masood and Azhar Ali open. Azhar Ali. We got Azhar Ali to open. Okay. All right. Yeah. So, but one player from Australia that we Pakistanis won't mind scoring tons of runs, as long as Australia is not winning, is Usman Khawaja. And Usman Khawaja, he's been a wonderful ambassador of the game. He's been a very vocal advocate of the cricket returning to Pakistan. And the way he's been talking, not just Usman, but many Australian players have been acting like, not cricketers, but like diplomats. The overall body language, the tone, the selection of words has been superlative. There's hardly any mentioning of, unless a Pakistani journalist asks that, there's hardly any mention of security and concerns and stuff. The focus is entirely on cricket. They are on a mission here, and the mission is a pretty noble one. Bringing normalcy to Pakistan as far as cricket is concerned. Just a few thoughts on the role of the overall Australian cricketers' attitude, and especially Usman Khawaja. Isabelle? Oh, it's incredibly important. And I think a lot of credit has to go to the Australian Cricketers Association. So that's the representative body for the players. And they had representatives coming out alongside the governing body, Cricket Australia, to Pakistan before this series. And they were the ones, I think, that were very important in getting the players comfortable. So Usman Khawaja has been elected onto their board. So he's now, he's in his 30s. He's quite settled. He's a new dad. He's captain of his state side. And he's quite a strong voice within that team. And obviously, he's come back into the Australian setup when he made back-to-back hundreds. So I think he's somebody that a lot of the players have used as a sounding board. But then I think also the past players, Shane Watson, of course, who's played so many seasons in the PSL and absolutely loved his time here. He's now the president of the Australian Cricketers Association. So I think his voice was very important. George Bailey, who's the
the chief selector for the Australian men's team. He played a few years back. I think it was an invitational T20 series for a World 11 that came out here in 2017. True. But then you go back even to the players that played here back in the 1990s. I think Darren Lehmann, he's been a very big advocate of the Australian men's team coming back out. So I think the past players from both the recent past who have played in T20s over here, but also those that last played here in the last Test series were around. And then the Australian Cricketers Association as a whole. It's been a real group effort, and it's something that I think a lot of other nations, and I would suggest England, could learn from as well, because I think it's been nothing but positive from those voices. Exactly, and I hope that this series would open the gates for all the other countries who hesitate to come here to this region, to this part of this world. So I hope it gets better and we get to see a very good and cracking series here. But thank you, Isabelle. Thanks a lot for your time. Thanks for being here. And we would look forward to welcome you in our studio, because when you are in Karachi for the second test, and you won't be staying very far away from where our studio is located. So it will be an honor to welcome you here. Well, thank you very much. It's been a pleasure. Thank you, Isabelle. Thanks a lot. So, मज़ेदार डिस्कशन, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ साथ जो फॉरेन मीडिया है, दे वेरी कंफर्टेबल. एंड जब मैं इज़ाबेल की बात करती हूँ, आई रिमेंबर कि एक फुटेज बहुत वायरल हुई थी इज़ाबेल की, जिस वक्त ECB ने मना किया था पाकिस्तान टूर करने को, एंड शी वाज वेरी वेरी फ्यूरियस. एबनी के साथ आई बिलीव वो डिस्कशन थी उनकी, एंड शी वाज वेरी फ्यूरियस कि कैसे एकदम से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कैसे बैकआउट कर सकता है, और जिसकी कोई बेसिस नहीं है और कोई वो नहीं है. सो शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए. एंड देन फिर जिन प्लेयर्स का उन्होंने बताया, हम बात करते हैं उस्मान ख्वाजा की, मगर बैकग्राउंड में जो और प्लेयर्स हैं, जैसे वॉटसन की उन्होंने बात की, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन जो है उसकी. So that is really good. अभी इन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी कई दफ़ा इस बात का, I mean, एक डिसअपॉइंटमेंट आपको नज़र आ रही थी इज़ाबेल की गुफ्तगू में मुसलसल के. शी इज़ डिसअपॉइंटेड विद द एटीट्यूड ऑफ, मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त जितने भी उनके, आई एम श्योर इवन द क्रिकेटर्स, जो उन्होंने बड़ा क्लियरली आके बोल दिया था कि जी हमसे तो किसी ने बात नहीं किया ना आने के हवाले से. बट बहरहाल जी, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वो साहब जो उस वक्त इंचार्ज थे, या वो जो उस वक्त ग्रुप लीड कर रहा था ECB का, दे आर हिस्ट्री नाउ. आई थिंक वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी, वो जो उनका डिसीजन था. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इंशाल्लाह द सीरीज इज़ गोइंग हेड, और आगे वाली सीरीज भी आगे चल रही होंगी. इफ़ यू वांट टू फॉलो इज़ाबेल, और शी राइट्स रियली वेल, शी स्पीक्स रियली वेल, आप जो है इनको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, Isabelle Westbury, WESTBURY लिख के सर्च करेंगे, so you can follow her Twitter handle there. And as I said, there is a very nice. अच्छा चलें, अभी हम बात करते हैं ज़रा आज दोनों टीमों के कप्तानों और क्रिकेटर्स जो हैं, उन्होंने आज मीडिया से बात की. बाबर आजम ने भी बात की है, आइए सुनते हैं बाबर ने क्या कहा. इन दो लेजेंड के नाम जो ट्रॉफ़ी अनाउंस हुई है और ये सीरीज़ होने जा रही है, बिल्कुल हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और कोशिश ये करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें. और 24 ईयर बाद टीम आई है, तो हम काफ़ी एज अ टीम एक्साइटेड हैं. Yeah, really special. You know, we've got a really long history of playing against Pakistan. I've had some good series back home, but never over here. A whole generation of Australian cricketers haven't had the chance to be over here and play. So as a group, we feel really privileged and lucky to be here. So that's the Benu Qadir Trophy for you. ये आपने देखा, और दोनों कप्तान ये बात कर रहे थे. और पैट कमिंस अपने मुल्क में तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेल चुके हैं, लेकिन असल तो इनको अब पता चलने वाला. और मेरा ये ख्याल है, आई थिंक सवेरा आप अगर इनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बयानात से भी आपको अंदाज़ा होगा, दे आर टेकिंग दिस सीरीज़ एज अ मैसिव चैलेंज. हम अपने शो में काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में, इवन इन कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड बांग्लादेश, दे हैव स्ट्रगल्ड वेदर इट्स लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट. इंडिया की तो हम बात करते ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में तो ज़ाहिर है वो एक मखसूस ब्लेंड ऑफ क्रिकेट खिलवाते हैं, हर एक को मखसूस टाइप की विकटें. पाकिस्तान में उस लेवल की विकटें नहीं मिलेंगी, दे विल बी मोर कंपेटिटिव, बट इट्स अ बिग चैलेंज. एंड आई थिंक दीज ऑस्ट्रेलियंस, इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है दैट दे आर ऑन फॉर इट. बिल्कुल. और जिस तरह बार बार ये बात कर रहे हैं वो, दिस वुड बी अ चैलेंज फॉर अस. कल जितने लोग पिंडी स्टेडियम में थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त जिन्होंने बताया कि सबसे पहले ट्रेनिंग जो शुरू की, या बैटिंग और नॉकिंग प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू की, वो स्टीव स्मिथ, और सबसे आखिरी जो गए वो भी स्टीव स्मिथ, विच मीन्स स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. उनको पता है हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया. इफ़ ही विल गिव अ गुड स्टार्ट, ऑस्ट्रेलिया को ऑल टुगेदर बहुत अच्छा स्टार्ट मिलेगा, ऑल टुगेदर बहुत अच्छी एक
प्लेटफॉर्म मिल जाएगा परफॉर्म करने के लिए, और फिर ऑब्वियसली उनको शाहीन शाह अफरीदी को फेस करना होगा। बहुत मजा आएगा जी, एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट राइट नाउ आई बिलीव वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक, सो कीप वाचिंग गेम सेट मैच, वी विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, क्योंकि जवान है पाकिस्तान। ये है लाला का समा। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था।
इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच डिस्कशन। हमारी हो रही है ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले इज़ाबेल वेस्टबरी हमारे साथ मौजूद थी। साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में देखने वाले हैं। बट जब हम फॉरेन मीडिया की बात करते हैं, जब हम फॉरेन जर्नलिस्ट की बात करते हैं, वो लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ के, पहली दफ़ा मौका मिल रहा है पाकिस्तान टूर करने का इन लोगों को, एंड दे आर एन्जॉइंग देयर टाइम, they're having different cuisines, they're having Pakistani cuisine and Pakistani food and enjoying it. But local हमारा मीडिया, हमारे अपने जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो लोग भी वहाँ मौजूद हैं काफ़ी तादाद में, और पिंडी में शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं वो कि कब जो है फ्राइडे आए, कब 4 मार्च हो और कब पहली बॉल डले इस ट्रॉफ़ी की। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सो भट्टी साहब, गेम सेट मैच में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया सवेरा, बस अब थोड़ी देर पहले ही मैंने किया है इस्लामाबाद में, और अभी होटल में चेक इन भी हुआ हूँ और आपसे बात हो रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरह आप लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, हम भी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 24 साल एक बहुत बड़ा अर्सा होता है। 24 साल पहले जो अगर बच्चे पैदा होंगे तो अब तो वो जवान हो गए होंगे, पूरी नस्ल जो है वो क्रिकेट से महरूम रही। तो मेरा ख्याल एक तारीखी लम्हा है। फिर उसको तारीख साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आज बनाया है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो दो अजीम खिलाड़ी थे, रिकी बैनो और अब्दुल कादिर, इनके नाम से बैनो कादिर ट्रॉफी मंसूब की गई है। तो एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन एक थोड़ा सा जो मैंने आती, जिस तरह आपके साथ बहुत बाहर के मुल्कों में गई, हम दूसरे शहरों में जाते हैं, आते ही जब मैंने वेदर चेक किया तो वेदर फोरकास्ट पहले 2 दिन के बाद यहाँ बारिश बता रही है। अब देखें, ऐसा ना हो कि बारिश में भंग डाल दे। नहीं भट्टी साहब, अगर पिंडी में भंग डाल भी दिया तो वैसे भी कराची और लाहौर में भंग की इतनी काश्त होती नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ का जो वेदर है वो क्रिकेट के लिए कंड्यूसिव होगा। लेकिन भट्टी साहब, बात बड़ी सिंपल है, और वो ये कि अब तक जो बार बार हम देखते आ रहे हैं और बात करते आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस का ओवरऑल एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का अंदाज एंड ऑल, उनका फोकस प्योरली क्रिकेट पर है। इस वक्त कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। और अब तक जो आपने आज पैट कमिंस का शायद हो सकता है आपने बयान देखा हो, कल हमने स्टीव स्मिथ को देखा, बड़ा प्रोफेशनली और डिप्लोमेटिकली एक्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में। बल्कि आज अदील जो नेथन लाइन उनके ऑफिसर हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की है। एक तो उन्होंने साइड का इजहार किया है कि मेरी कोशिश होगी कि बाबर आजम क्योंकि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, तो चैलेंजिंग है उनको बॉलिंग कराना। लेकिन नेथन लाइन ने कहा है कि मैं बाबर आजम को आउट करना चाहूंगा इस सीजन में। फिर दूसरी ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ 3 मिल से अगर सीरीज जीत जाए तो मतलब खतरे की घंटी तो है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत प्रोफेशनल टीम है। देखिए 2010 में मुझे इत्तेफाक हुआ ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को कवर करने का। तो एक तो सिडनी का बड़ा फेमस टेस्ट मैच, जब गालिबन 180 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, मोहम्मद शमी और दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान को जीत के करीब पहुंचा दिया। लेकिन आपको याद होगा फेमस स्टंपिंग जो मिस किए कामरान अकबर ने, पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। फिर एक आपसे इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करूंगे आखिरी टेस्ट मैच का होबार्ट से। मैं उस्मान समीउद्दीन और एक हमारे दोस्त हैं खालिद हुसैन, जो कराची में सीनियर जर्नलिस्ट हो, हम लोग ऊपर खड़े हुए थे। हमारे नीचे मोहम्मद आमिर फील्डिंग कर रहे थे। वो किसी खातून के साथ बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। ये वो टाइम था जब रिकी पॉन्टिंग फॉर्म में नहीं थे। रिकी पॉन्टिंग आए, उन्होंने पहला ही फाइनल के स्ट्रोक खेला, सीधा गेंद मोहम्मद आमिर के पास में, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और उस कैच में रिकी पॉन्टिंग की फॉर्म वापस आ गई। उस ड्रॉप कैच की वजह से उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम हाईली प्रोफेशनल है। इस टीम को भी आप देख लें, ऑन पेपर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है। हमने जिसमें 2021 में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उम्मीद है कि होम सीरीज में हमारे
गए, हम नवाज अनफिट हो गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पिछली सीरीज जो हमने यूएई में जीते थे ऑस्ट्रेलिया से गालिबन 3-4 साल पहले, उसमें जो हमारे मेन बॉलर थे मोहम्मद अब्बास, उन्होंने 17 विकेटें ली थी यूएई की विकेटों पर। बिल्कुल। भट्टी साहब, मोहम्मद अब्बास ने जो है वो अब रिजर्व में जो है वो हिस्सा बन गए मोहम्मद अब्बास, क्योंकि रिजर्व के जो नसीम शाह थे वो आ गए हैं अब स्क्वाड में, तो रिजर्व में मोहम्मद अब्बास जो है वो हिस्सा बन गए। बट आई होप कि और कुछ हमें ना इंजरी सामने दिखें या कोविड के कोई केसेस ना दिखें। आई होप कि ऐसी अब जो हमारी फर्स्ट 11 हम चाहते हैं खिलाना वो खिला सकें। बट भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि हमें बहुत अच्छी सीखने को मिले। एंड अदील, जब हम कमेंटेटर्स की लिस्ट की बात करते हैं, सो कमेंटेटर्स की लिस्ट भी आ गई है। कमेंटेटर्स की लिस्ट अभी सामने आई है, वेरी एक्साइटिंग पैनल हम देख लेते हैं जी। रॉब की एन इंग्लिश कमेंटेटर इज देयर, इसके अलावा साइमन कैटिच ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर ओनली फॉर टेस्ट मैचेस, माइकल कैस्परोविच इज गोइंग टू बी देयर, वेरी नाइस टू हियर हिम, वकार यूनुस, बाजिद खान, उरूज मुमताज, Zainab is there, Sikandar Bakht, and we have got Neroli Meadows. And we have got Neroli Meadows. So very nice panel. ये पैनल जो है सामने मौजूद है और जिस तरह का रिची बेनो, अब्दुल कादिर ट्रॉफी, बहुत ज़बरदस्त नाम और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और विद दिस गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग रखना अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।